So I'm here today filming with some ladies and some minors. There's a huge amount of misreporting in the media that there's no children and there's no women here. I'm here to document that that is not the case. And I've met this lovely lady here, and this here we have a baby who was born in the jungle about a month ago in the local hospital not far from here. The lady herself is a professional nurse, and she has escaped from Afghanistan through a treacherous journey, and I'm just going to let her give you some of that background of what she's doing here, how she arrived here, and what's the plan really moving forward. So आप बताओ, आप पहले अफगानिस्तान में रहते थे, ठीक है ना? हाँ, तो आपका काम क्या होता था वहाँ? मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी। सुबह जाती थी 6 बजे, शाम को 4 बजे वापस ही होती थी। तो आपने, so she's just explaining that she used to be a nurse in a hospital, working throughout the week. तो क्यों छोड़ा था आपने काम? Why did you leave that job? इसलिए छोड़ा था कि वहाँ पे तालिबान नहीं चाहते थे कि औरतें घर से बाहर जाए और औरतें काम करें। हम पहले जाते थे तो पहले कुछ अच्छा था, फिर जब पहले इब्तिदाई में अच्छा था, लेकिन बाद में मुश्किल होती गई। तालिबान नहीं चाहते थे कि औरतें आए और हॉस्पिटल में काम करें या स्कूल में सबक पढ़ाए। तालिबान चाहते औरत सिर्फ और घर के लिए है, खाना पकाए और शोहर को खिलाए। ये इस्लाम के खिलाफ है कि औरत घर से बाहर जाए और मर्दों के साथ काम करे या किसी और शोबे में काम करे, क्योंकि तालिबान कहते हैं कि जब औरत बाहर से घर से निकलती है वो काफिर होती है, क्योंकि गैर मर्दों के साथ काम करना और खुसूसन एनजीओ के साथ जब काम करते हैं तो एनजीओ ये तो इस्लामी ममालिक की नहीं होती, ये औरतों को राह से निकाल देते हैं, ये काफिर हो जाते हैं। इसलिए तालिबान नहीं चाहते कि हम काम करें। So the lady's explaining here that when the Taliban took over ruling the land, they prevented all women from working, so she was no longer able to work as a nurse in a hospital. And you know, their rationale behind that is because they thought it was anti-Islamic to be associating with males, so they were no longer able to be public servants, which a lot of the women were, or indeed be working with NGOs, again, as a lot of the women were doing at the time. And tell me about before the Taliban. Taliban से पहले जो आर्मी होते थे, आप बता रहे थे कि ब्रिटिश आर्मी, अमेरिकन आर्मी, कि कैसे वो खड़े होते थे। जब आर्मी जाते थे, ये सारे आईएसएफ आर्मी जब जाते थे तो इसके पास 15 से लेकर तकरीबन 20 टैंक होती थी। So मैं बताती हूँ। So prior to the Taliban there was British Army, American Army, Russian Army, कोई और? France, Germany. So all what we call the Allies would be lined up in a queue of approximately 20 tanks in a line. जब ये जाते थे रास्ते पर, इसके टैंक में कुछ खराबी होती थी या ऐसे भी रुक जाते थे तो 2-3 घंटे किसी को, अगर डॉक्टर्स हो या गैर डॉक्टर्स हो या टीचर हो, किसी को इजाज़त नहीं थी कि वो उसको टेक ओवर करे, उस तरफ जाए। जब ये खड़े होते थे हम भी खड़े होते थे। So they'd block the roads for whatever reason. Sometimes they would be stood there because there may be a fault with the machinery, but more often than not they would just be standing there blockading the roads and not letting anyone pass. So people like this lady who was a nurse coming home from hospital, or various other workers employed in NGOs there, Afghanistan people, would just be stuck on the road with their children, or however that situation might be. The shooting करते थे टैंक से जिसको उस पर शक था कि ये तालिब है, कि 50 मीटर इसके और हमारे दरमियान फासला होती थी घर को, कि नज़दीक जाते तो शूट करते हैं कि ना हो, नज़दीक ना हो।
हो सकते हो आप तालिबान से हो या ये ऐसा So if they suspected that you were Taliban, they would shoot at you for whatever reasons. So they would you would always have to keep your distance. And she was telling me earlier that she saw people get shot regularly in her family. And the Taliban shoot you as well? या तालिबान जब आर्मी से जो होता था, आर्मी में जॉब करते थे या डॉक्टर होते या टीचर होते थे, इसको रास्ता पकड़ते कि ये जब आए और जाए तो उसको शूट करते थे या गाड़ी से निकाल देते तो शूट कर देते. So they pull you out of your car. And army or Taliban? Taliban. So the Taliban would pull people out of their vehicles and they would just shoot them dead in front of the entire family. And इसलिए आपने छोड़ा? हमने इसलिए छोड़ा, रोज बरोज खतरनाक होता जा रहा था, एक से दूसरी रोज ज्यादा खतरनाक होता, जाती भी डर से आती भी डर से. एक दिन मैं खुद आ रही थी हॉस्पिटल से, हमारे कार में 2 बड़े डॉक्टर्स एमडी डॉक्टर्स थे लेडी, और दो मिडवाइफ और थे, एक मैं थी मिडवाइफ दूसरी क्लिनिक से एक होती, एक मेरी बहन मिडवाइफ थी, हम सारे जाते. So one day she's relaying a particular scenario. One day she was travelling herself and a couple of midwives. या जब हमारे पास आ रहे थे तो ड्यूटी से तालिबान ने हमें पहले लेटर लिखे थे कि ना हो. कहाँ लिखा? अफगानिस्तान में कि ना हो, ड्यूटी पर ना हो. नहीं, यानी कि आपके घर में भेजा ना था? हाँ, घर में भेजा. So when they were spotted coming home from their workplaces, the Taliban wrote to them and said that they give them a written warning first of all, which was posted to their homes, that you must not come to work anymore. अच्छा भी आगे. फिर हाँ, हमने ये मुअस्सिसे को दिखाया, एनजीओ को दिखाया कि तालिबान ने ये लेटर भेजा है कि जॉब पर मत आओ, तुम इस्लाम से हट गए हो, ऐसे ही लिखा था, तुमने क्रिश्चियन की So you've stopped being a Muslim, you're taking a Christian route. This is what the Taliban wrote. या लेकिन एनजीओ ने कहा नहीं, किसी ने शायद मजाक किया होगा, ऐसे वैसे रिश्तेदार होंगे, मजाक किया होगा. हमने ये खत एनजीओ को दिखाया, हमने कहा ठीक है, उसने कहा हम जिम्मेवार देते हैं, तुम लोग जाओ, तुम लोग वहाँ पे औरतों के लिए काम करते हो, बच्चों के लिए काम करते हो. So the NGO persuaded them that this letter wasn't a genuine Taliban letter, and a lot of this goes on, the lady saying, and they persuaded them that look, you're really needed, you're nurses, you're midwives, you're doing work for women and children, that you must report to hospital, don't worry, it won't be a problem. हम जब दूसरी दिन आ रहे थे, इसके बाद जब आ रहे थे तो तालिबान ने रास्ता पकड़ा था और हमारे गाड़ी देखी तो उस पर फायरिंग की. फिर उस फायरिंग से गाड़ी ऊंचाई पर थी, ड्राइवर तो उस वक्त मर गया, लेकिन गाड़ी ऊंचाई से गिर गई और मेरा इस हाथ में एक लगी कोलाबोन जो है ये टूट गई, यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया. अच्छा. So the following day, because they hadn't heeded the Taliban's written warning, on the way back from hospital, from work, on the way back travelling home, the Taliban had already blocked the road in anticipation for them, and without hesitation started shooting at the entire vehicle. Shot dead instantly the driver. The vehicle itself fell from a higher height or road, as I understand, to a lower place, and shot through this lady's collarbone. उसके बाद मैंने काम छोड़ दिया, लेकिन दो माह तक उस एनजीओ के साथ थी, फिर काम भी छोड़ा, लेकिन तालिबान ने हमें नहीं छोड़ा. So after that, the lady gave up work, and she gave in to the Taliban. However, by this point, she said that the Taliban didn't give up. They were angry and continued with their terrorist activities. मसलन क्या करते थे आपके साथ? कॉल करते थे, फोन पर कॉल करते थे, धमकी देते थे. 3-4 बार हमने घर भी बताया, रात को अटैक करते थे, आते थे घर पे, मसलन घर पे आते थे,
हम तो ज़्यादातर मैं कभी माँ के घर जाऊँ, कभी एक बहन, कभी एक रिश्तेदार के घर पे नहीं रहती थी, क्योंकि फोन करते थे जब धमकी देते थे तो हम पहले से डरे हुए थे, फिर और भी डर जाते थे, मजबूरन घर छोड़ना पड़ता था। घर चेंज भी कर देते, पता नहीं, फिर भी पता चलता कि इस एरिया में या इस जगह पे है, उस जगह पे है, तब भी ढूंढते थे। मेरे एक और मेरे हस्बैंड की वाइफ थी, एक दिन मेरी बेटी बीमार थी, हमने ऐसे अस्पताल में एडमिट किया था, इसको वोमिटिंग थी और दिरिया थी, एडमिट होना पड़ा। मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी थे, हमारे घर पर आए थे हमें शूट करने के लिए। हम मेरे जो हस्बैंड की दूसरी बीवी थी वो अनएजुकेटेड थी, वो घर पे रहती थी, तो मेरी जगह उसको शूट किया, सर पर मारा था, गुड़िया हंसी यहाँ तक निकल गई थी। उसके बाद जब उसको शूट किया तो मजबूरी थी कि छोड़ना पड़े, किसी को भी जिंदा ना छोड़ते थे, इसलिए हम So, after the shooting of the vehicle and the lady then attempted to give up work, the Taliban then didn't leave them alone. They would constantly get phone calls and threats telling them that they were going to come after them. They used to come to the house late at night, banging on the doors, and just basically frightening them and terrorising them. So they moved house a bunch of times, often hiding with different family members, her mother, her sister, but the Taliban always found them. And on one particular time the lady was at hospital because her young daughter was sick, and so they shot whoever was the female relative in the home instead, out of anger, and just put a bullet through her head from one side to the other. उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद हमने मेरे हस्बैंड ने एक मर्द के एजेंट के साथ बात की कि हमें यहाँ से जाना है, और उसने हमारे लिए हमें ईरान भेजा. So after that point, they decided that it was not safe to live in that country anymore, not for them and not for any of the family members or just acquaintances and neighbours that they were with, because obviously the Taliban were ruthless at that point in shooting anyone that was associated with them. So they met with an agent. Smuggler. A smuggler. By an agent she means a human trafficker, a smuggler, who then helped them arrange a plan to get through Iran. Sorry. After Iran, come to Turkey. Okay, so how did you get to Iran? By the road? By air. By air. तो हवाई जहाज से आई ईरान तक. उसके बाद एक दूसरी शहर ले गए कार में. उसके बाद जब ईरान में उसके बाद जब हम गाड़ी से उतर गए तो एक बड़ी सी चोटी थी, पहाड़ था, उस पर चढ़ा दिया. दिन का टाइम था, जब रात हो गई चढ़ गए तो 10 बजे के करीब रात. फिर कहा कि यहाँ से खोज जाओ, फिर रास्ता दिखाया कि उधर जाओ, वो तुर्की की लाइट है, छोटी छोटी सितारों जैसे नज़र आ रहे थे, वो तुर्की है. वहाँ पर पहुँचे तो वो तुर्की वहाँ पे तुम लोग कोई ईरानी पुलिस या वगैरह काम नहीं करता. नहीं, ईरान पुलिस ऐसा होता है जब बॉर्डर पकड़ते हैं तो या जेल ले जाते हैं या रात के टाइम पर शूट कर देते हैं. मैं बताती हूँ. So they managed through the smuggler to find a route. They took an aeroplane from Afghanistan through to Iran. From Iran, then they somehow travelled to a high place, which I think is maybe up some hills and mountains, where she said from a far distance she could see a light in the far distance, which was Turkey, which they headed towards. And after you arrived in Turkey? पाव से तकरीबन एक दिन एक रात हमने पैदल चल गए. So they walked for a day and a night. And how many people were you with? कितने लोग थे? 6-7 family थी. So 6 or 7 families with children and women? Children with women. Okay, young children? Like this. बड़े थे, छोटे थे. So old people, young people. और कुछ जिसके सिंगल लड़के भी थे.
Okay, so young male miners on their own. तो सारे चल के फिर अगली सुबह 10 बजे के करीब हम पहुंच गए। वहाँ पे भी पुलिस की रूट थी, वहाँ पे पुलिस ने पकड़ा, फिर 2 घंटे के बाद छोड़ दिया बॉर्डर में। So the Turkish police. So So they did actually get tangled up with the Turkish police by the borders, who kept holding them for 2 hours, but then after 2 hours released them. फिर जो वहाँ पे कुछ थोड़ी 1 घंटे बैठ गए कि एक आदमी ने रूखी सूखी रोटी लाई और एक पनीर लाया, उसके साथ खा लिया। फिर दूसरी गाड़ी में बैठ गए, वहाँ पे बैठ गए, 1-2 घंटे के सफ़र तय किया। फिर वहाँ पर एक और जगह पर उतारा, वहाँ पे भी तकरीबन 10-20 मिनट रुक गए। फिर एक बस स्टेशन ले गए, वहाँ पर बस के टिकट लिए और वहाँ से हमें इस्तांबुल रवाना किया। Istanbul. So after much more walking and barely being able to had anything to eat but some dried bread and some, some dried cheese, they managed to get to the bus station in Turkey. वहाँ पे हम बैठ गए बस में। जब बस में दिन को बैठे, रात भी बस में गुजारी, तो अगली सुबह 10-11 के करीब इस्तांबुल पहुँच गए। So then they managed to arrive in Istanbul early in the morning. Okay, और आगे से? फिर वहाँ पे कुछ दिन ठहरना पड़ा, कुछ दिन वहाँ पे ठहर गए। उसके बाद हमें ले गया किसी और जगह पे, उसका अच्छा नाम था, आज भी भूल गई। एक जगह पे ले गया, उसका नाम भूल गई। फिर वहाँ से हमें सवार किया, एक छोटी सी बोट थी, उस बोट पे सवार किया। Boat. Okay, so after they've taken this bus journey, they then mounted on a very small boat. कितने लोग थे बोट में अंदाज़न? तकरीबन 25-30 के करीब थे। Okay, so about 25-30 people, all on this one small, very tiny boat. अच्छा, तो बोट कहाँ से फिर इस्तांबुल से आगे से कहाँ है? नहीं, इस्तांबुल से किसी और जगह पे ले गए, वहाँ से बोट में सवार किया। फिर वहाँ पे एक जजीरा था, वहाँ पहुँच गए। कहा कि यहाँ पे अब वेट करो कि पेपर मिल जाए। फिर उस पेपर के इंतज़ार करना पड़ा। 2 दिन 2 रातें बारिश भी हो रही थी, इधर इधर का पानी भी था, उसमें खड़े होके बच्चों को गोद लेने के, वो बहुत सा और मुश्किल थे। 2 दिन 2 रातें वहाँ पे रहे। So for 2 days and 2 nights, after they'd travelled across the sea, they then had to stay in some what she's describing as some wet ground with all the young children and all of the family for 2 days and 2 nights in water up to knee deep. वहाँ से पेपर में फिर बड़ी सी किश्ती में हमें सवार किया और So at this point they were given documents. किस चीज़ के लिए थे कागजात? वो कि बड़ी किश्ती के लिए थी। किश्ती में सुना बड़ी किश्ती में जब सवार होते हैं उस जजीरे से, तो आतान ले आते हैं। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि वो पेपर लो और फिर बड़ी किश्ती में सवार होके आतान आते। So here they awaited certain documents that they needed to get permission to go to travel further. Okay. फिर वहाँ से किसी और के साथ बात की। वहाँ ने एक आदमी ने कुछ रोटी दी और कुछ कपड़े दिए, हमें तब्दील करने पड़े क्योंकि ज़्यादा मेले हो गए थे। फिर उसके बाद ज़्यादा क्या हो गए? मेले डर्टी हो गए थे। अच्छा, okay. So then they needed to sort out some new clothes, etc., so that they could look presentable to be able to travel because their clothes were destroyed at that point. जब आतन पहुँच गए तो वहाँ एक पार पर हमें बैठाया गया, फिर कुछ खाना दिया, उसके बाद कहा कि तुम लोग जाओ। वहाँ से हम गए, फिर आतन से मकदूनिया और सर्बिया 12 घंटे का सफ़र पैदल तय किया। पैदल? हाँ, पैदल 12 घंटे। तो वहाँ से जाके सर्बिया आप पैदल गए? Okay, so then they travelled by foot to Serbia for walking for 12 hours with toddlers and young children. वहाँ सर्बिया पहुँच गए, फिर वहाँ पे एक रात गुजारी। जब सुबह हो गई तो फिर
4 घंटे और सफर किया. So then they stayed one night in Serbia, and then they walked for another 4 hours the following morning. एक और बस आई, उसमें सवार हो गए. फिर उत्तरीश आए. उत्तरीश के बाद ऑस्ट्रिया. Oh, okay. And then they took a bus to Austria. ऑस्ट्रिया से फिर ट्रेन ली जर्मनी आए. जर्मनी So from Austria they took a train to Germany. And from Germany. ट्रेन ली यहाँ तक आए. And so from Germany they got a train to France. And फ्रांस से बस थी. And from France they arrived by bus to the jungle. Okay. And now you've been in the jungle for 10 months. That's my uncle. 6-7. Okay. So they've been in the jungle for about 6 or 7 months. Yeah. And you're here with all your family? Okay. And आप बता रहे थे कि जब बच्चा बड़ा होगा फिर स्मगलर कहते हैं कि फिर आगे ले जा सकते. बताओ. How old is the baby? ये तो अभी 1 माह का है. So what the baby is, so the problem is she's stuck at the moment because she's got a 1-month-old baby. The smugglers won't accept the passage of a child so young because they won't be able to survive the next leg of the journey, which is on to be smuggled onto a truck. So she has to wait for a year for that child to be at least 1 year old. आप बताओ आपने. जब ये 1 साल का होगा तो फिर हम इस सफर को इदामा देंगे क्योंकि अभी ये छोटा है, नहीं हो सकता है ये रोए. वैसे भी तो so the baby might cry and it might alert people because of the noise it will make. So not so much the danger of the health, but because of the noise it won't know to stay quiet. हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों का आइंदा अच्छा हो, फ्यूचर अच्छा हो. हम खुद कमाए, खुद जॉब पर जाए. मेरा शौहर जॉब पर जाए. गवर्नमेंट कितना देगी? 200-400 ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से ज़्यादा नहीं देंगे. हम चाहते हैं हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, हमें भी कुछ कमाए, हमें भी कुछ नई सीखने को मिले क्योंकि मेडिकल में नई चीज़ें आती है सीखने को और हम खिदमत भी करें. पहले आप ये बताओ कि आखिरी सफ़र आप कैसे करेंगे? आखिरी सफ़र स्मगलर के साथ बात करेंगे. इसके बाद So from here the next step will be again to speak with another smuggler. Smuggler कहाँ से मिलते हैं? यहाँ पे आते हैं, पूछते हैं कि किसी को जाना है. जंगल में आते हैं. हाँ, जंगल पे इधर कौन से सब कल्चर में होते हैं? पाकिस्तानी, अफगानिस्तान, सुदानीज, कौन से होते हैं वो स्मगलर? हर किस्म के हैं. Okay. So the smugglers of every nationality who frequent in the jungle, and they will arrange for you then to. So how will you go from? आप कैसे यहाँ से आगे जाएंगे? दीवार के ऊपर, फिर ट्रक के ऊपर, कैसे आप बता रहे हैं? लारी में बैठ के फिर चेक पकड़ते हैं. लारी में बैठ जाते हैं फिर चेक पर पकड़ते हैं. अभी तो हम नहीं जाते because the baby's too small. So the next plan will then be to get them somehow smuggled onto a lorry and taken to the for each refugee it's different. For themselves it is the UK, they've got family there, but as the lady was saying, her plan then is, unlike what people think, that people want to arrive to the UK to gain some kind of government benefit and housing. As she's just said, you know, that's a minimal amount that the government give. What she wants to do is to be able to be independent and learn some skills and go back to work again, whether it's as a nurse or something else. Yeah? Hannah? Okay. So tell me about your life here in the jungle. What do you do, for example? So we're in this caravan. I won't show it you for obvious reasons. कितने लोग यहाँ रहते हैं इसमें? इस caravan में 6 लोग रहते हैं. So 6 people sleep in this caravan, but not your husband, No, because the men aren't allowed on this side. मेरे husband दूसरे caravan में रहते हैं. So she can't stay with her husband. मैं और मेरे बच्चे इसमें सोते हैं क्योंकि पहले मेरे शौहर भी यहाँ सोता था. ऊपर जगह नहीं थी तो वहाँ पे सोता था ज़मीन पर. यहाँ इस जगह पे सोता था और हम यहाँ पे सोते हैं. ये नया कारवान जो लाए है ये 1-2 माह का होता है कि ये लाए है. पहले सब इस कारवान में सोते थे और नहीं था. And it's stifling hot in here, as you can imagine, with the heat.
And what do you do all day? क्या करते हैं सारा दिन? कुछ बस नहीं यहाँ? करते, यहाँ इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब हो कि हम वहाँ जाए। सारा दिन यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे, शोहर भी यहाँ पे होता है। Okay. कुछ करने को है नहीं Yeah. कि कुछ So this is one of the reasons why there's a lot of need for mental health here. They're literally sat in this small room with nothing to pass the time, which is hard enough for any person, but for professional people such as this lady and her husband, it's even all the more challenging. And as I'm sat here now, the sweat is literally pouring off me. And what kind of things do you, so tell me, for example, the food. Where do you eat from? कहाँ से कुछ खाते लोग हैं? हर मंगल को थोड़ा बहुत लाते हैं। एक नंबर की रेबे वो है, 6 नंबर की रेबे वो है, उसमें 3 कैन लोबे के होते हैं। 1 किलो शुगर होता है और 1 किलो घी होता है, 1 लीटर, तो वो दे देते हैं 1 हफ्ते के लिए। फिर कभी सलाम से ले आते हैं, यहाँ पे सलाम पे भी देते हैं पका हुआ खाना। और ये जो ये पका नहीं होता, ये तो प्लास्टिक में देते हैं हर मंगल को, आज के दिन। और सलाम में सुबह को देते हैं और शाम को 3 बजे शुरू होता है, 5 बजे ख़त्म। और सुबह को 9 बजे शुरू होता है, 11 को ख़त्म होता है। तो गुजारा होता है सबको खाने के लिए? करना पड़ता है। करना पड़ता है। हाँ, गुजारना हो तो कैसे? So there are minimal donations handed out, which they're not really sufficient, but they have no choice but to make ends meet. And what about clothes, कपड़ों or medicine or बच्चे की चीजें जैसे nappies and things like this? नैपीज और ये तो ब्लू बस पर मिलता है। इसकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कपड़ों की प्रॉब्लम होते हैं, शूज़ की प्रॉब्लम होती है। एक दूसरे आते हैं, उससे कहते हैं कि हमारे लिए ये लाओ, कोई लाता भी है, कोई नहीं लाता भी। जब दूसरी चीज़ें आते हैं, ये मेरे हो जाते हैं, इसको फेंक देते हैं। अगर ना लाए तो वही हमारे पास होते हैं। So fortunately, babies' nappies are donated by the Women's Centre here, which is a blessing. However, the things that the ladies are challenged with is clothing and footwear in particular. And there's nowhere to do laundry here at all. There is no sanitation. There is no washing powder. So when the clothes get to a certain point where they're too soiled, they have to be discarded, unfortunately. And और आप कह रहे थे कि पैसे नहीं होते क्योंकि आप काम नहीं कर सकते। काम नहीं करते तो पैसे कहाँ से? जब ज़रूरत पड़ती है, कोई पैदल जाता है, जैसे हॉस्पिटल के अभी तो हमारे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, सिर्फ मिडवाइफ काम करती है, वो भी छोटी बहुत प्रॉब्लम के लिए। बच्चों का डॉक्टर तो नहीं है कि हम उसको दिखा सके। जब भी लेते हैं, मैंने इसको 2-3 दफ़ा ले गई अस्पताल इधर सलाम पे वैक्सीन के लिए। एक दफ़ा कहा कि आओ, मैं गई तो कहा वैक्सीन नहीं है, दूसरी रोज़ आओ। जब सुबह में फिर गई तो कहा वैक्सीन कहीं भी नहीं है यहाँ पे, अभी तक वैक्सीन इसको भी नहीं हुई। फिर मैंने फिर कहा अगले हफ्ते आओ। अगले हफ्ते गई, कहा कि इंतज़ार करो, शायद आ जाए। So sometimes obviously they have to travel out. For example, when the lady needs to get vaccines for the little baby, and quite often she has to make that journey by bus, which they can ill afford the money. And it's not just one journey, because they could quite easily go to hospital and the medication may not be there, so they may be asked to return again and again, which all costs money which they don't have. So how will you pay for the smugglers when they need the money for your journey? कैसे देंगे पैसे? पहले थोड़े बहुत थे, अब वो भी ख़त्म हो गए क्योंकि यहाँ पे 6-7 महीने गुजारे। खुद गई अस्पताल, बच्चे गए। जब यहाँ पे रजिस्टर ना हो तो आपको अदा करना पड़ता है। जब यहाँ पे आप अर्जी करो तो शायद ये लोग दे या ना दे, इसको मुझे पता नहीं है। वो पहले थे तो हम चाहते थे कि हम जाए, लेकिन यहाँ पे जब हमने सुना कि 10,000 के करीब मांगते हैं, 8,000 के करीब, इतनी तो नहीं थी कि हम एक नफर के 10,000 तो क्या करेंगे? 8,000 के दे। अभी इंतज़ार करें कि खुद कुछ मौजूदा हो जाए, हम जाए।
इतने ज़्यादा तो नहीं है. So the lady's saying that to get further down the journey, which she can't do at the moment because the child is too young, but even if she was in a position where the child was older, she doesn't have the finances to be able to fund that, and she's hoping for, well, two things really. First of all, that the fees might somehow be reduced by the smugglers, which is highly unlikely, but also that somehow they're able to gain some money from somewhere. Okay. और कुछ बताना आपने? Okay. शुक्रिया आपका.